प्रार्थनया वयम् अस्य वर्गस्य प्रारम्भं कुर्मः। या कुन्देन्दुदुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करप्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा। शुक्लां ब्रह्मविचारसारपरमाम् आद्यां जगद्व्यापिनीं वीणापुस्तकधारिणीम् अभयदां जाड्यान्धकारापहाम्। हस्ते स्फाटिकमालिकां विदधतीं पद्मासने संस्थितां वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदां शारदाम्। सर्वेषाम् आगतानां स्वागतं करोमि। गतवर्गे अस्माभिः णिजन्तानाम् अध्ययनम् आरब्धम्। कोविदवर्गे णिच् तथा सन् प्रत्ययोः अध्ययनम् अस्माभिः करणीयम्। नमस्ते महोदय। नमस्ते सोमशेखर जी। नमो नमः महोदय। नमो नमः। सर्वेषां स्वागतं पुनः करोमि। सनादि प्रत्ययेषु अन्तर्भूतः इमौ प्रत्ययौ णिच् तथा सन् इति। णिच् प्रत्ययस्य योजनेन धातोः अर्थम् अपि यदा प्रेरणार्थकः भवति चेत् तस्मिन् किञ्चित् परिवर्तनं भवति, यथा गतवर्गे अस्माभिः दृष्टम्। कुत्र युज्यते अयं प्रत्ययः? धातु पाणिनि धातुपाते आहत्य 2,000 धातवः कथ्यन्ते। ते धातवः 10 गणेषु विभक्ताः सन्ति। All dhatus are divided into 10 ganas. एतेषु दशमगणस्य धातूनां कृते अयं प्रत्यय विधीयते। तस्य प्रेरणार्थकेन परन्तु स्वार्थे। So just to get the own meaning of the dhatu, by default it is used. So if I take a Churadi gana, Churadi is the 10th gana, so it has the original meaning. Churasteye iti dhatoh artham asti. Churasteye. Churadi ganasya prathama dhatuh. So if we add णिच् pratyaya, there is no change in the meaning of the dhatu. It retains the original meaning of stealing. So it is a swarthika णिच्, swarthe णिच्. But for all, including Churadigana, we can use this णिच् pratyaya for the preranartha for all 10 ganas. Even the Churadigana, we can use the dhatu in the preranarthaka artha. In this case, there is a change in the meaning of the dhatu, original dhatu. So if we say patha iti औपदेशिक dhatu asti, तेन सह णिच् प्रत्ययस्य योजनेन पाठी इति नूतनस्य धातोः निर्माणं भवति। पठनं करोति इति पठति, परन्तु पाठनं कारयति इति पाठी इति धातोः अर्थं भवति। So first the औपदेशिक धातु पठ वक्तायां वाचि iti, to read out aloud. Mind that word, to read out aloud. It is not reading inside our mind. The original artha is.
If you are reading a novel, basically it is not Patavaktayam Vachi. The actual meaning it should be recited, or it has to be spoken aloud while reading. You will come to know why I am insisting on this particular meaning. So, one is to read by oneself, and second one, if I use Pathi to make some other person to read, that is the difference of Preranarthaka. Mahodaya Shamitam, can your voice be little louder, Mahodaya? Louder. Louder. This is the max. Another voice is coming. Idanim Shruyate va? Dhvani Shruyate, Mahodaya. I thought maybe a little louder will be better for me. Astu. Ida kinchita ध्वनौ किंचित परिवर्तनं भवति तर्हि अहं कर्णयन्त्रं त्यजामि. यदा किंचित it is slightly better now, Mahodaya. अस्तु. श्रूयते खलु? अवगन्तुं शक्नुवन्ति सर्वे? आम् महोदय. Yeah, we can hear. अस्तु. So, निजन्ताः अश्वाः धावन्ति, सारथिः अश्वान् धावयति. धावयति, धावन्ति, धावयति. वनं गच्छति, रामः वनं गच्छति, कैकेयी रामं वनं गमयति. गच्छति, गमयति. शिशुः शेते, माता शिशुं शाययति. छात्राः उत्तराणि लिखन्ति, गुरुः छात्रैः उत्तराणि लेखयति. So all this dhavayati, gamayati, shayayati, lekhayati, ete anijanta rupani. Actually, the dhatu itself is an anijanta. So patha plus nij is pathi. So this itself is an anijanta dhatu. And what we are using is the derivation of the lat lakara, lot lakara, whatever. So, णिच इति प्रत्यये णकार चकारयोः लोपो भवति, केवल इ इति अवशिष्यते. चोरी, पाठी, कारी इति आतिदेशिक धातवः भवन्ति. So, whatever has been told in the dhatu patha are called aupadeshika dhatavah. What we are making a new dhatu by adding a sanadi pratyaya is called atideshik dhatu. So nich, san, kyang, kamyach, ning, these are all will be atideshik dhatu. सामान्यतः अत्र एतेषां प्रयोगे अय इति श्रूयते. चोरयति, कारयति, पाठयति, श्रावयति, नाशयति, क्षेपयति, क्षालयति. अय 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 केवल श्रूयते सर्वथा. Because of the presence of णिच and शप्. We will last time we had learnt about the prakriya. So those who are giving the exam for Kovida is not supposed to learn the prakriya. I just explained how these rupas come, how the rupa is derivated. See, so dasha ganaha santi, teshu churadi gane णिच प्रत्ययः भवति. चोरयति, गणयति, कथयति, क्षालयति, एतानि रूपाणि भवन्ति धातुना. सर्वेभ्यः धातुभ्यः प्रेरणार्थके णिच भवति.
One is a Swarthi Kanich, one is a Prernartha Kanich. So even if we use a Prernartha Kanich for the Churadigana, we will not get a double lineage. This is prohibited in the grammar. So we'll not have a Chora Yayati. We will not get it because it is prohibited. सर्वेभ्यः धातुभ्यः प्रेरणार्थे निच भवति, पाठयति, खादयति, गमयति, नाययति. तो ऋजन्ताः द्विविधाः भवन्ति, स्वार्थे तथा प्रेरणार्थे. कृष्णः नवनीतं चोरयति, स्वयं चोरयति वा अन्यैः चोरयति इति अस्माकं प्रश्नः स्यात्. तर्हि मित्रैः चोरयति इति अपि भवितुं शक्यते. रूपे भेद न भवति, केवलम् अर्थे भेद एव भवति. So there is no change in the rupa, like in both the cases it will be chorayati. We have to understand the meaning by looking at the entire vakya or the circumstances. Gruhini graham marjayati, gruhini sevikaya graham marjayati, तत्रापि मार्जयति, तत्रापि मार्जयति. रूपे भेद नास्ति, अर्थे भेद अस्ति. अस्तु, अत्र स्वार्थे भवति, अत्र प्रेरणार्थे भवति. प्रेरणा इत्युक्ते किम्? इदानीं कोऽपि वदतु. प्रेरणा इत्युक्ते किम्? भारती भगिनी. प्रेरणा इत्युक्ते स्वयं कार्यं न करोति, किन्तु अन्यान् प्रेरणा ददाति यत् भवान् वा भवती एतं कार्यं करोतु इति सामान्य अर्थः. उत्तमम्, उत्तमम्. सर्वे अवगन्तुं शक्नुवन्ति वा? आम् महोदय. ऋजन्ताः उभयपदिनः भवन्ति. पाठयति अपि भवति, पाठयते अपि भवति, लेखयति भवति, लेखयते अपि भवति. अस्माकं पुस्तके केवलस्य परस्पदिनः धातनाम् एव रूपाणि दत्तानि सन्ति. अतः वयं परस्मैपदीन रूपाणि एव प्रयुञ्जामहे. इदानीम् एकः लघुभ्यासः अस्माभिः कृतः. अस्मिन् स्वार्थे अथवा प्रेरणार्थके णिजन्तः इति वक्तव्याः. किञ्चित् त्वरया अभ्यासं कुर्वन्तु सर्वे. सुदरेश महोदय आरम्भं करोतु. कृष्णः नवनीतं चोरयति, स्वार्थे वा प्रेरणार्थके? स्वार्थ. उत्तमम्. पद्मा नागेश महोदय, माता पुत्र्या अन्नं पाचयति. प्रेरणार्थक महोदय. उत्तमम्. हस्तिपकः गजेन कदलीफलं खादयति. वाणिश्री भगिनी. प्रेरणार्थक महोदय. उत्तमम्. पिता कोपेन पुत्रं ताडयति. प्राजक्ता महोदय. अन्म्यूट् भवतु आदौ. अन्म्यूट् भवतु भगिनी. स्वार्थे. स्वार्थे. उत्तमम्. गृहिणी गृहं मार्जयति. केवूर् महोदय. अन्म्यूट् भूत्वा वदतु कृपया. प्रेरणार्थे. पुनः एकवारं. गृहिणी गृहं मार्जयति. स्वार्थे. 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 उत्तमं. मैथिली भगिनी. षष्ठं. गृहिणी सेविकया गृहं मार्जयति. प्रेरणा. उत्तमं. सेविकया. धन्यवादः. धन्यवादः. रूपाणि कथं भवन्ति? आदौ अत उपधायाः अनेन सूत्रेण वृद्धिः भवति. उपधायां यदा ह्रस्व अकारः अस्ति तस्य आकार आदेशः. अकारस्य स्थाने आकार भवति. उपधायाम्. उपधा सर्वे जानन्ति खलु? अलोऽन्तरा उपधा. सो लास्ट बट वन. सो पठ इति धातु अस्ति. तो पकार ह्रस्व अकार ठकार. ठकार इति अंतिम वर्ण. तस्मात् पूर्वम्
अकार अस्ति तस्य अकारस्य णिचि प्रत्यये परे आकार भवति पाठी इति रूपं भवति पाठी इति नूतनं धातु पतति पातयति पत इति धातु अस्ति पाति इति भवति हसति हासयति हस धातु हासी इति धातु भवति अजन्त धातूनां वृद्धि अजन्त अन्ते स्वरः अस्ति सामान्य रूपेण अत्र इगन्तमया लिखितमस्ति केन कारणेन किन्तु वृद्धिः अथवा गुणः इगन्तानाम् एव भवति इकवर्णस्य एव गुणवृद्धिः भवति अन्ते न गुणवृद्धि इकवर्णानाम् एव भवति अतः सूत्रम् अपि मया लिखितमस्ति नमो नमः अचोञ् नीति इति सूत्रमस्ति अणित् प्रत्यये अथवा इयत् प्रत्यये परे अकारस्य अच इत्युक्ते अजन्त शब्दानां वृद्धिः भवति अजन्त धातूनां वृद्धिः भवति करोति इति धातु अस्ति डुक्रिय करणे सो धातु विल बी कृ तो ककार ऋकार अन्ते ऋकार अस्ति तत्र आर् इति आदेशः भवति वृद्धि आदेश तो कारयति धातु विल बी कारी धरति ध्र इति धातु अस्ति धर धारी इति धातु भवति धारयति स्मरति स्मृ धातु अस्ति स्मारि इति धातु भवति स्मारयति नयति नाई नाययति नाई will be the dhatu. We have done this in the last class, so I'm just doing the revision. Okay, that's why I'm going a little bit faster. So ni plus e. Last time we have gone through this, how the ni will be converted to nayayati. Have you understood it last time? Understood? Prashnaha nasti khalu etasmin? Modi, can you please explain the iganta again? Ajanta, iganta. Ajanta dhatu ending with a vowel. Ah. So basically, Vruddhi and Guna is done only for the Iganta or Ikavarna. I, U, R, R. Okay. Keshameva Guna athva Vruddhi adesha bhavati. So that is why I have written Igantanam Vruddhihi. Ante yadva ik varnaha asti lakhu ap athva rasva. Lakhu api bhavati, rasva api bhavati, parantu ante bhave. Asya vruddhi adesha bhavati. Okay. Yeah. So this is the ante bhavati. Now in the upadha. In the apudha, we have to see if the upudha varna is a laghu ik. E, U, R, R. Laghu ik, hrasva ik bhavati. Chet. Tasya gunadesha bhavati. Puganta laghu upathasya cha. Iti sutrena. So you don't remember the sutra now. Okay? Just keep this in mind. So if there is a laghu or hrasva ik varna in the upadha, there will be a gunadesha. So what will be the gunadesha of E? A. E will be, adesha will be A. So likhati, lekhayati. So likha iti dhatu asti, khakara iti ante asti, halanta dhatu asti. Tasmat purvam hrasva ikara asti. Lakara, hrasva ikara, hakara. Teneva ikarasya यथा लघु अथवा ह्रस्व इकार अस्ति चेत् तस्य गुणादेशः भवति तो ए इति भवति सो लेखी इति रूपं भवति धातु विल बी लेखी क्षिपति क्षेपयति क्षेपि इति धातु मिलति मेलयति मेलि इति धातु नाउ ह्रस्व अस्ति इकार
म्यूट भवन्तु कृपया। दा उकार अस्ति चेत् ओकार आदेश भवति। लघु उपधायां लघु उकार अस्ति अथवा ह्रस्व उकार अस्ति चेत् तस्य ओकार आदेशः भवति। तुष्यति, तुष् धातु, तोषी इति धातु भवति। तोषयति, क्रुध्यति, क्रोधयति, कुप्यति, कोपयति। So when we are deriving a dhatu from this to this, keep this in mind, the original dhatu, not the lat lakar rupam. The lat lakar rupam will maybe change. For example, if you find that there is a case of the dan dhatu, dan dane iti dhatu, tasya yacha adesha bhavati lat lakare. So it is yachati. But what we have to do is tapayati. If you go on checking the lat lakar rupam and add a, you will not get the rupam correct. We first go to the original dhatu and then change the upadha, see the upadha or the end of it. Rakara asti athva kra gunadesha nrityati laghu upadha, not the guna. Laghu upadhava laghu rakara asti athva hrasva rakara asti. Nartayati nrit dhatu nakar रकार तकार उपधायां रकार अस्ति तस्य अर आदेश भवति नृत्यति नर्तयति नर्ति इति धातु भवति कृषति कर्षयति सृजति सर्जयति. So when we are doing the rupani, default keep this in mind that all nijant dhatu will be hrasva ikaranta dhatu only. Hrasva ikaranta dhatu, because we are adding the e at the end. What is the meaning of srijati, Mahodaya? Srijati, sarjanam karoti. Sarjanam karoti, to make something. Okay, धन्यवाद. यदा अन्य स्वराः सन्ति चेत् तेषु कोऽपि परिवर्तनं न भवति. ह्रस्व दीर्घ स्वर अस्ति खाद इति अस्ति चेत् खादयति, क्रीड अस्ति चेत् क्रीडयति. So what I have said is उपधायां लघु इक् भवेत्, ह्रस्व स्वर ह्रस्व इक् भवेत्. But what if there is a dirgha? So there is no change. खादयति, क्रीडयति, धावति धावयति, प्राप्नोति प्रापयति, ऊर्दते ऊर्दयति, वेपते वेपयति. Please keep this in mind. Even if I am writing khadayati, kridayati, but it will have both parasmaipadi and atmanepadi rupani. Khadayati, khadayate, kridayati, kridayate, dhavayati, dhavayate. Okay. So as we have seen, ajanta अथवा सरांत धातुना वृद्धि आदेश भवति. यथा तृ धातु अस्ति, तृ तरणे इति. सो तृ तारयति, तृ तारयति, कृ कारयति. So that is what I was trying to make you understand. That's if we say nrit, it will be nartayati and not nartayati, because this is at the upadha. Rakara is at the upadha, not at the end. But tr, it is at the end. So I think this is dirgha. Tr. Avgantum Tr is to swim, Mahodaya. Tr is to swim. Yes. Tarati, to cross basically. Not to swim, to cross. Okay. Nava tarati sa navika. What crosses by nauka is called navikaha. So tarati is not only swimming, just to cross. Okay. Mahodaya,
महोदय नृ और क्रू में मुझे समझ में नहीं आया। क्रू नृ में नहीं है। कारयति था होता है ना क्रू में, तो नृ हाँ। में नर्तयति वो समझ में नहीं आया। ये नृ नहीं है, नृत्य धातु है। नृत्य धातु नृत्य है, नृ धातु नहीं है। ओके, क्योंकि थैंक यू। नृ यहाँ पर उपधा में है, हाँ यहाँ हाँ पर एंड में नहीं है। यदि हाँ एंड में होता तो होता, हाँ उसमें वृद्धि आदेश होता, परंतु हाँ यहाँ पर एंड में नहीं है, इसीलिए उपधा में है। हाँ हाँ, समझ में आ गया। तो इसमें इसको अर आदेश हुआ है, गुणादेश हुआ है। एजंत धातवः सन्ति, ए ऐ ओ औ, एजंत धातवः। सो they will first get the akaranta adesha bhavati. ita kai, ga, dhyai, dhya, and then they will have a pugagam, pakarasya agamah. Sho, sha tanukarne. This is sho is a dhatu. It will have a sha iti, sorry, the rupam adesha rather. Cho, cha. This is the adesha. एजंत धातु नाम आकार आदेश भवति। एजंत, ए ऐ ओ औ। बोलिए भारती जी। यहाँ गई 2 मात्रा दी है, मगर समझो कि 1 मात्रा है ये, तो उसका भी गा होगा। यदि हो, लेकिन इसमें धातु गई है, इसलिए मुझे गई का ही उदाहरण देना पड़े। समझने के लिए सिर्फ। हाँ, समझने के लिए यदि है तो होगा। महोदय, what is the जी। meaning of गाय? धातु। टू सिंग, सिंग, गायनम Sing. करोति, Okay. गायति। गायति। ओरिजिनल इज गई। Okay. धन्यवाद। And I ध्यै, do have one more. This क्रीणति. How, what is क्रीणाति, it? क्रीणाति। क्रीणति. Okay. नहीं, what you want to ask भगिनी? Like niche pratyaya, how it takes the thing, transforms. Yeah, we will come. Actually, it is krapayati. Pardon? Krapayati. Crap. Krinati. It will have a, it is a kre dirgha ikarant dhatu. I think it should be the same word. It will I come. think dhatu is cringe dhatu, isn't it, Mahodaya, for that? Cringe dhatu. Krinya. Cringe. Dravya vinimay. Krinati, that you want to ask, or Kridati? क्रीणाति होता है। हाँ, तो डुक्रिया द्रव्य विनिमय। So Titisha Krinati, this will be in the rupa, in the samanya, and in the nijanta will be krapayati. धन्यवाद। So अभ्यास 2, मैथिली भगिनी आरंभं करोतु। चलति, Chalati, chalayati. उत्तमं। रीटा भगिनी धरति, धरति धारयति। उत्तमं। केयूर महोदय बुध्यते, बोधयति। उत्तमं। शंकर महोदय प्रीणाति, प्रीणयति। प्रीणयति, उत्तमं। प्रीणयति। खिद्यते, शोभना भगिनी खिद्यते। प्रीणयति इत्युक्ते टू मेक समवन हैप्पी। खिद्यते, खेदयति। खेदयति। रोदिति, सोमशेखर महोदय रोदिति, रोधयति। रोदयति, उत्तमम्। सो हियर बुध्यते बुद्ध धातु अस्ति। उपधायां
लघु उकार अस्ति तेन कारणेन ओकार आदेशः बोधयति बोधि इति धातु भवति बोधि and then there will be a shap and then there will be a ti or te. महोदय प्रीणाति अस्ति तस्मिन् आकार अस्ति प्रीणा तो कैसे आएगा? नहीं, धातु प्रीण धातु है, आ बाद में लगता है उसमें, वो तो अभी नहीं, वो श्ना का, वो श्ना जो है उसका है। समझ में नहीं आया महोदय। धातु क्या है? प्रीण, प्री धातु है, सिर्फ प्री धातु है। वो जब क्रियादि गण में है धातु है तो उसमें उसका विकरण प्रत्यय है स्ना। तो क्रीणाति, स्ना में से शकार की लोप उत्संज्ञा हो जाती है तो क्रीणाति, सॉरी प्रीणाति बनता है रूप। हम लोग जो व्याकरण का जब प्रक्रिया करेंगे तब हम लोग एक एक गण की प्रक्रिया कैसे होती है हम लोग सीखेंगे। धन्यवाद महोदय। क्रियादि गण में उसका विकरण होता है श्ना, तो शकार का लोप होता है इस संज्ञा से, केवल ना रह जाता है, तो क्री और ना। तो यहाँ पर आप देखिए रेफ है लास्ट में, तो रेफ अथवा रकार के बाद में यदि नकार होता है तो उसका अणत्व होता है। अणत्व होता है। हाँ, तो क्रीणाति। हाँ महोदय। आकारांत धातूनां पुगागमः भवति। आकारांत धातूनां पुगागमः भवति। So akarant dhatu now will be of two types, one which are original akarant dhatu and which are converted to akarant by a pugagama adesha. So what we have learnt earlier that ejantanam akara adesha bhavati. Ejant dhatu will have an akara adesha. Dhyai dhya. So all this akarant dhatu will have a pugagama or pakarasya agama. So da dapayati, ja gnapayati, yati to go, yapayati to make someone go, bhati bhapayati. So this is gai that I was telling, gai which is an agent dhatu, it will have a ga adesha, then there is a pakaragama, then there is an ich. So gapi iti dhatu. We have learned earlier that all the agent dhatu will be have an akaranta adesha, a. So dhyai dhya, gai ga. So when there is an a, it will have a pugagam or yukagam abhi bhavati. Sometimes there is, for special dhatus, there is an agama of yakar also. Like payayati. It is not papayati, payayati. Shayayati. So lalayati. Lalayati is also there, Mahodaya. No? Lalayati. Lalayati, but it is not a agama. Pugagama. This is a pugagama api asti, yakarasya agama api bhave kutrapi. So da dhatu asti. So I have already told you, look the original dhatu, not the lakar form. Tadati. Da dhatu asti, dapayati. Rupam will be dapi. Janati, original dhatu will be nya. Nyapayati. Bhavani Bhagini, Shanka asti va? आं महोदय, आप पूर्वं करोतु। पूर्वतन उदाहरणात् मम शङ्का अस्ति। प्रीणयति इति प्रीधातोः अत्र प्रीणयति इति रूपं धातुपाठे पश्यामः चेत् प्रीयोग निच् इत्युक्ते कर्तरि विशेषात् इति परस्मैपदम् आगच्छति किल। अत्र नुक् इति आगमम् अस्ति अत्र दत्तं, तत् किम् इति अहं न जानामि, तदेव मम शङ्का अस्ति। So there is an agama of nakara
If it is an kit, हाँ and we have already learned, right? Kit and mit agama. If it is an agama of nakar, it can be of two types, nukagama or numagama. हाँ भवती जानाति खलु तदेव नुमागम. मम प्रश्नमस्ति तदेव मम प्रश्नम् अत्र तु प्री एव धातु अस्ति अत्र नुक् इति आगमस्य किं कारणं किं भवति तत्र कारणं मया न लिखितमस्ति खलु. कारणं तु न न न पतञ्जलि पाणिनि जानाति खलु. तद् अहं जानामि महोदय. मम प्रश्नः अस्ति कोऽपि सूत्रः अस्ति वा इति, सूत्रम् अस्ति वा इति मम प्रश्नम्. अत्र तु किमपि न दत्तं परन्तु सूत्रमस्ति प्री धातु धूयु इणु नु वक्तव्यं वार्तिक अस्ति. ओ प्री धातु दो धातुओं के लिए नुक का आगम होता है णिच परे होने पर. अस्तु तद् कृपया गणे मध्ये प्रेषयति वा? अरे सूत्र संख्या लिखतु कृपया. तो क्या लई जावी छे पूछो. धन्यवादः महोदय, क्षम्यताम्. अस्तु, एतावत् पर्यन्तं सर्वे अवगन्तुं शक्नुवन्ति वा? ददाति, दापयति, जानाति. जी, दापयति अत्र भवान् उक्तवान् पुगागमः इत्यस्य अर्थं किम्? पुगागमः पकारस्य आगमः. पकारस्य आगमः पुगागमः. अस्तु. आकारान्त धातु मध्ये एतदेव भवति निजन्त धातूनां. जानाति, ज्ञापयति. ज्ञा इज द ओरिजिनल धातु. याति, यापयति. भाति, भापयति. गायति, गापयति. ध्यायति, ध्यापयति. So these two dhatus are basically agent dhatus. Dhyai and gai. So they have an akar adesha at the first, and then there will be a pugagama. Pugagama means agama or introduction of pakara. So मूल धातु द्रष्टव्यः. Pashyati. So this is not a mool dhatu. The mool dhatu is drash. These have a pashya adesha for the sarva dhatu glakara. So, but the origin, now the rupam will be darshayati. Drash darshayati. Atra rakara asti upadayam laghu ik asti tasya gunadesha darshayati. Tishtati. Stha dhatu asti. स्थापयति. पिबति. पा धातु अस्ति. पाययति. तत्र युगागम भवति. यकारस्य आगम and not पकारस्य. यच्छति. धातु is धा. Sorry, धातु is दा. दापयति. जिघ्रति. धातु is घ्रा. घ्रापयति. इच्छति. धातु is इष. एषयति. Am I going too fast? No, Mahodaya. No, I was thinking Jigrati is some. It looks like I understand Jigrati. When you read and see the grapayati, it takes some time for it to sink in, to make someone smell. That's right. So there is a big sutra, Padma, Gra, and if they have this corresponding Adesha, there is a big sutra. This all these Drasha, Tishta, all they have an Adesha is all, it is written. Shiti Pare. So there is a Sarva Dhatuk Pratyaya Pare. So all these have an, this will be the change in this Rupa. So Drish will have a Pashya, Stha will have a Tishta, Pa will have a Piva. But already in the only 4 lakaras,
lat, lot, vidhiling, and lung. You will not get in the rit lakar. It will be pasyati. It is not a pibasyati. Pasyati. Dasyati. It is not be achati. Gasyati also for singing gasyati. हाँ. ओके, अवगन्तुं शक्नुवन्ति वा सर्वे? आं महोदय। महोदय दा मध्ये अपि ददाति यच्छति अपि दा मध्ये दापयति द्वयोः मध्ये द्वयोः समानः मध्ये समानता नास्ति। अर्थः समानमेव भवति, परन्तु धातुः भिन्नः अस्ति। धातुरूप दा एव अस्ति No, मूलरूप no, 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 no. First you understand, if the rupam is dadati, it will be in a jyotyadi gana, and the dhatu will be यच्छति dudai. Da. Dudai dane. Dudai. Dudai dane. Jyotyadi gana. And if I say yachati, the dhatu will be dan. Dan. Many of the times someone tells that sometimes it had yacha and sometimes it have a dadati. It is not correct. Please keep this in mind. There are two different dhatus, same meaning, belong to two different ganas. One is a dana. After the it sanya, it will have a da, and dudai, which is in the juhotyadi gana, it will also have a da avashishyate after the it sanya. But depending on the gana, it will change in the rupa, yachati and dadati. So यच्छति दाने दाने भवति दान दाने दान धातु अस्ति तस्य यच्छ आदेश भवति, but dudai अस्ति तस्य यच्छ आदेश न भवति. It is remains at da, and because of the jyotyadi gana, it will have a dvitva adesha. Dadati. In all the jyotyadi gana, all dhatavaha ye santi, tesham dvitvam bhavati. Juhoti, hu dhatu asti, juhoti, dha asti, dadhati, dadati. एवं एव द्वित्वं भवति. वयं यथा सन्नन्तानाम् अध्ययनं करिष्यामः, द्वित्वं विषये किञ्चित् दर्शयामि कथं भवति. सन्नन्ते अपि द्वित्वं भवति. सो एते धातवः सन्ति, तेषाम् उपधायां ह्रस्व अकार अस्ति चेदपि तस्य दीर्घ न भवति. गम, नम, रम, वम, यम, आचम. You have to keep this in mind. You just remember these dhatus, that gam, nam, ram, vam, yam, and acham. These dhatus doesn't have a dirghadesha of the upadha. Gam, it will be gamayati, not gamayati. Ramayati, namayati, yamayati, vamayati. एते अपवादाः अस्ति. विशिष्ट धातवः सन्ति, अपवादाः सन्ति. Basically, it is called mit dhatu. There is a gana called ghatadi dhatu. Ghatadi gana asti. So it has taken dhatus from different ganas. Some of them will be from Juhotyadi gana, some of them will be from Bhavadi gana, and etc. This small gana, all this ghatadi gane, ye dhatavah santi, tesham mit iti adesha bhavati. So these dhatus are named as mit dhatavah. Mahodaya, what's the meaning of acham? That dhatu, how does it go? Achamaniyam. Achamaniyam. Understand. So generally, when we did the it sanya in the asmakam vyakarana varga, so mit will be the it sanya of a makara, right?
But here you are still saying makara. There is no ich sanya of makara. Keep this in mind. These are mitam hrasva. This dhatus belonging to ghatadi gana, and accordingly they have collectively known as mitali dhatavah. You just keep this in mind. It is not required at this stage. Okay. You may have some questions like why it is so. Even if I say mitadi, so you will have the what is mitadi, because ये जनाः व्याकरणवर्गे इत् संज्ञा पठितवन्तः ते कदाचित् चिन्तयन्ति यत् मित् यदि अस्ति चेत् मकारस्य इत् संज्ञा भूत्वा तस्य लोपः भवेत्, परन्तु अहं तु मकार द्रष्टुं शक्नोमि, एतेन मया उक्तम्. Okay, you just have to remember this 5 to 6 dhatus. Gam, nam, ram, vam, ivam, yam, acham. महोदय घटादि इत्युक्ते दशलकारेण आगच्छति न? ना. गण में इसमें से सब धातु में से एक दो करके धातु सभी गणों से लिया हुआ है. उसका एक छोटा सा गण बनाया हुआ है, उसको घटादि गण कहते हैं. और घटादि गण में जो भी है उसको वो धातु मित बोलते हैं. उसको घटादीना मितः, शायद ऐसा सूत्र है, आई एम नॉट श्योर, बट उसको मित बोलते हैं. मकार से हाँ, और जो मित धातु है उसको ह्रस्व आदेश होता है. पहले हम उसको बढ़ा देते हैं, अतः उपधाया से बढ़ा देते हैं, गामयति करते हैं, बाद में फिर मिताम ह्रस्व करके उसको फिर से उसको ह्रस्व कर देते हैं. ठीक है. ये अभी आपको जरूरत नहीं है, हम लोग व्याकरण पढ़ेंगे तब, अभी टेंशन मत लीजिए. गच्छति, गमयति, रमति अथवा रमते, रमयति, नमति, नमयति, यमति, यमयते, वमति, वमयति. Okay, just keep this remembered. Nam, kam, nam, ram, vam, yam, आचम. आचम क्या है? जो आचमनी करते हैं ना हम लोग, पीते हैं वो, पूजा के टाइम में पानी देते हैं हाथ में, वहां आचमनी करके पीते हैं. अब उबधायाम अकारः नास्ति, संयोगः अस्ति. अत्र वंद धातु अस्ति, तत्र उपधायां नकारः अस्ति, अकारः नास्ति. अत्र पश्यतु, वंद वकार अस्ति, अकार अस्ति, नकार दकारयोः संयोगः अस्ति. हलोवंतरा संयोगः. दो हल के बीच में यदि स्वर नहीं आता है तो उसको संयोग बोलते हैं, हलोनंतरा संयोगः. तो यहाँ पर उपधा कौन है? अकार नहीं है, यहाँ उपधा है नकार. तो इसमें वृद्धि नहीं होगी. तो यहाँ पर वंदते है तो वांदयति नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर उपधा में अ नहीं है, उपधा में न है, संयोग है, या कोई भी संयोग हो सकता है. वंदते, वंदयति, कंपते, कंपयति, लंबते, लंबयति. इतना ध्यान में रखना है. आपको आगे धातु देखना है, लट लकार रूप अभी मत देखिए. ओरिजिनल धातु क्या है? वंद, कंप, लंब. एक्चुअली कंप भी नहीं है, ओरिजिनल धातु इस कपी. सो कपी लीतोनुम धातु से हम लोग नकार का आगम करते हैं, फिर नकार को अनुस्वार करते हैं, फिर अनुस्वार को वर्णसवर्ण करके मकार करते हैं. अस्तु महोदय. भारती जी एकदम समझ में आ रहा है ना? हाँ महोदय, समझ में आ गया. थोड़ा थोड़ा तो आ गया, फिर आगे हम पढ़ेंगे तब समझ में आ जाएगा पूरा. ठीक है. अन्य का भी प्रश्न अस्ति वा कोऽपि?
प्रश्नः सन्ति चेत् पृच्छन्तु। प्रश्न पूछने में कोई झिझक मत रखिए कि मैं नहीं जानता बाकी लोग जानते हैं, ऐसा कुछ नहीं। Sir, Vamayati, is it not like Vamayati? Something like To make someone vomit. Vomit. Or is it to vomit the person like Vamachara, something like they tell Vamachara, like they Charya, do some Vamacharya. mystic. I'm not sure about this. I'm not So sure it about doesn't this. come under that. Dhatu No, will this not be dhatu there. is different. Okay, धन्यवाद. धन्यवाद. Or is it to like Vam also means, is it to dispose also? See, vam, it is in the dhatu part, it is called vam udgirane, to vomit, to take out, to emit something, to give out, to get sick. Okay. There are many arthas given. But Is it like generally, not to we consider? we take us as to vomit. Okay. धन्यवाद. Sir, it can also be taken as to make somebody speak out something. Speak out? Yeah, means to, yeah. To जो हिंदी में बोलते हैं ना, जो भी बोलना है उगल दो, वो उगल दो। in that way, yeah. ये Yeah, इसमें I ये was saying the संस्कृत same भाषा thing. में नहीं होता है। अस्तु महोदय. इसमें जो मीनिंग जो अष्टाध्यायी में लिखा है, टू वॉमिट, टू ड्रॉप, टू एमिट, टू गिव आउट, टू बी सिक, और भी नियम और भी अर्थ हो सकते हैं। ठीक है, आयुर्वेद में चीज है पंचकर्म उद्गीरणे। होता है ना, आयुर्वेद में पंचकर्म होता है, वो वमन कराते वमन हैं क्रिया होती है उसमें, वमन हाँ, क्रिया, तो उसी वही। से वमन क्रिया से, ये वम धातु से उसका वमन होता है। ये समझ में आ गया यहाँ तक? वंदते, कंपते, लंबते। अकारोत्तर संयोगः अस्ति चेत् तस्मात् आकार न भवति। अत्र अकार अस्ति तस्मात् अनन्तरं संयोगः अस्ति। अत्र अकारस्य आकार न भवति। हाँ महोदय, वायुना पर्णानि कंपयति। बाद में, अभी वाक्य बाद में आएंगे, अभी खाली रूप ध्यान में रखिए आप। ओके ओके। Now there are vishesh dhatavah santi, kanichan vishesha rupani, so which cannot be added to all this what we have studied. So you have to keep this in mind. Shru, shrunoti, shravayati. Mind this, shru is an ukaranta, refa and ukara. Here it is shru is a rakara, right? So there is a change by a sutra. It will be called shru. There will be change from refa to rakar. Shrunoti, shravayati. Krinati, krapayati. Snati, to bathe. Snapayati, snapayati. Bibheti. So there are three different groups: bhayayati, bhapayati, bhishayati. Special dhatu, three different groups. होगा ना, अर्थ एक ही है, डिफरेंट रूप है। विभाषा इसको बोलते हैं व्याकरण में, अन्य अन्य ये भी है, ये भी है, ये भी है करके। Basically, Panini, what has he done was to collect whatever was in existence and try to assimilate everything in a sort of a group. Then he made a sutra which incorporates a maximum equivalent.
This is a main sutra. And then gradually he gave us the exceptions. It will be easier for us to remember the exceptions rather than remember the what are included. If you have 2000 dhatus and there might be 10 exceptions, so it is easier for us to remember the 10 exceptions rather than remembering 1990 inclusions. Mahoday, I have a doubt. This Krenati, when we use in Tavya Taniyar, we say as Kretavyam and Krayaniyam. Is it Mahoday? So this Krenati becomes Kre Dhatu, Krapayati, you said. So when we use Tavya Taniyar, we say it as Kretavyam and Krayaniyam. Kretavyam, see, it is what you are telling is not a Nijanta Rupa. It is a Samanya Rupam. Okay, sorry. So in Yes, the Nijanta Rupam, it is Krapayitavyam, Krapaniyam. To make one by. Yes. Yes. So I will just return a Tiganta Prakriya, how this Tiganta Prakriya has come. I have taken a simple Aupadeshik Dhatu called Pat. Patha, we have added Anich Pratyaya, so it becomes a Pathi. So this Dhatu, Pathi, is a new Dhatu, or Sanadantya Dhatu, or Atideshik Dhatu. Now for the Pathi, we are adding a Kartari. Yada, if you want to use in a Kartari Prayoga, so there will be an addition of Shap. Kartari Shap iti sutramasti. Pathi plus Shap plus Ti. If I want to use in a Lat Lakar. So Pathi, from the Shap, there will be a Itsanya of Shakara and Pakara, and Akara is left. So Pathi plus A plus Ti. Now this Shapa will enforce the Ikara to change into Ekara by Gunadesha. Either want to know the Sutram, Sarvadhatuk, Ardhadhatuk, sorry, Patita, Ardhadhatuk Yoho, Pati. There will be a Gunadesha. Pathe, it will be the Rupam. Then, once he has given up his advantage of a Pratyaya or a Vikarna Pratyaya, it remains only as a Akar. So you can now do the Ayadi Sandhi. So we can do Echo Yava Yavaha and or Yantavanta Sandhi Pathayati iti Rupam Bhavati. अत्र पाठे अभवत् तत्तु इ धन अ इक्वल टू अय एवं अभूत. क्या चीज है? हमने पहले पाठ लिखे बरोबर, फिर उसमें स्टॉप लगाया अ बरोबर, तो ई अ अय हुआ ना, तो पाठयति नहीं, पहले गुण किया ना हम लोग. पहले गुण करेंगे तो क्या होगा? ई अ क्या होगा? पहले तो पाठे किया ना, तो बाद में ए होगा. ए को हम लोग एचो यवा हम में करेंगे, बाद में गुण क्यों करेंगे हम लोग? ए है और अ है, तो एचो यवा यावह से होगा, तो अयादेश होगा. अय होगा. तो पाठ है, यहाँ ए का ए ही रह गया, पाठे. पाठ है ना नीचे, तो इसके गुणादेश तो बाद होगा. मैंने बोला पाठी को गुणादेश होकर का पाठे हुआ, पाठे को बाद में यांता वांता संधि हुआ, पाठे और अ. गुणादेश होके अ का तो अ रह ही गया सब. हाँ, अ का तो अ रह ही गया. तो पाठ ये दोनों मिला करके पाठयति हुआ. So you will not be asked the prakriya, you just remember the rupan, that's all. अग्रे सरामः वा? शङ्का नास्ति खलु? न महोदय. एकं लघु अभ्यासं कुर्मः.
सर्वे वदेयुः। पुत्रः ददाति, पिता पुत्रेण। अहम् आह्वयामि, शंकर महोदय भवान् वदतु। पुत्रः ददाति, पिता पुत्रेण दापयति। उत्तमम्। इदानीं सुषमा भगिनी, यानं तिष्ठति, सः यानं स्थापयति। उत्तमम्। वृक्षः नमन्ति, फलानि वृक्षान्। रीटा भगिनी, वृक्षः नमन्ति, फलानि वृक्षान् नमयन्ति। नमयन्ति। केन कारणेन नमयन्ति? नामयन्ति केन कारणेन न अभवत्? नमयन्ति। Why not नामयन्ति? मित् धातु। I am asking her. नहीं, अहं न जानामि। मित् धातु आकार न भवति, दीर्घ न भवति। तो नम रम कम वम यम आचम विशेष धातु। विशेष धातु. So these are nitya dhatu, as correctly said. So I was just asking whether you know actually what I have taught you till now, or it is your reflex action that you are telling namayanti. Again, Maithili Bhagini, Shakhaha Kampante, Vayuhu Shakhaha. Yeah, just now you told they have that closeness. So, Vayuhu Shakhaha Kampayante. The same, no? No, something you said, I forgot. एक मिनट, और कोई जवाब नहीं देगा. Already forgotten. Sorry. So, in the Nijanta, the Nijanta Kriyapadam Sarvada Kartaram Anusarati. Now tell me. Who is the Karta here? Shaka. नहीं. Yatra Karta is, Nijanta Karta. Karta is Vayu. Vayu is the Vayu. Vayu. शाखा कंपयति. अन्य कोऽपि मा वदतु कृपया. Because of the Vayu, Shakaha. Vayu kasmin vachane asti? Vayu pratama. Then what it should be? Now tell me, what is the vakyam? Vayuhu Shakaha Kampayati. Kampayati. Vayuhu Shakaha Kampayati. Athva Kampayate. So I have to look Last at time only you had that. said Kampayante. That is why I corrected you. Astu. यहाँ द्वितीय नहीं आएगी, शाखान कंपयते एवं. लास्ट में भी आपने यही पूछा था, मैंने यही जवाब दिया था. लता शब्द का द्वितीय क्या होगी बताइए? लता शब्द की द्वितीय बहुवचन क्या होगी? शाखान. नहीं. अभी सबको कान पकड़ना होगा, मुझे मेरे से बड़े हैं फिर भी कान पकड़ना होगा. सॉरी. वयम वार्तां शृणुमः. केयूर महोदय, सः वार्तां श्रावयति. उत्तमम्. सुन्दरेश महोदय, भवान् वदतु. अहं दर्शयति. अहं अन्य कोऽपि न वदतु कृपया. अहं दर्शयति. पुरुषः, उत्तम पुरुषः खलु? दापयति. अहं पश्यति. दापयति कुतः आगच्छति? दर्शयामि. दर्शयामि. भवन्तः पश्यन्तु. अहं दर्शयामि. सर दर्शयानि भवत्वा लोट लगा. अहं दर्शयामि. अभी तो लट लकार में कॉन्सेंट्रेट करें, इसी में गलती हो रहा है सबका.
Let us जी focus on the lat lakar only at this time being. जी। और वो सर वो वम का मेरे दिमाग में इसलिए आया क्योंकि हम मधुराष्टकम में वमितम मधुरम Vamana, हाँ हाँ, हाँ इसलिए आई थॉट इट वाज फॉर स्पीकिंग आल्सो। इसमें लेकिन ये शायद वम 2-3 धातु हो सकती है। जो जी यहाँ पर मैंने यहाँ पर देखा उसका धातु है उद्गीर्णम अर्थे, जो अंदर से बाहर फेंकना। जी तो, जी तो इसमें नहीं दिख रहा है मुझे। जी। Sir, why that? Because we are using darshayati, darshayami, that dirgha shram. अहम अहम Darshay, दर्शयामि, अहम पश्यामि अस्ति खलु, अहम पश्यामि, अहम दर्शयामि. darshayami, we are using, no? So this is a different thing. Ato dirgho yahi, this is a sutram, will be different. Okay. So when we go to the kriya, how is the prakriya going, which each and every pratyaya we will learn in the class. Okay. So now focus on this. We know this rupani. How these rupani have come, we will go by sutra wise. I will teach you everything, whatever I know. Okay, sir. So here, generally what we say, aham pashyami, avam pashyamah, vayam pashyamah, a agachyati khalu. Very उत्तम पुरुषे वयम सर्वत्र आका आ एव पश्यामः सर्वत्र. अहम पठामि, हाँ, अहम खादामि, अहम पठामि, खादामि. अहम हाँ, यत्र उत्तम पुरुष भवति तत्र यय प्रत्यय परे अस्ति महोदय अकारस्य दीर्घादेश भवति. पश्यामि. हम पश्यामि, दैट्स ए लोट लकार, पश्यामि. Ani, ava, ama. First, when you learn the prakriya, you have to understand, you have to by heart all the pratyayas for parasmepadi as well as atmanepadi. Then only you will have this in mind, how this pratyaya come, how this rupa has come. Okay. Mahodaya, one doubt, Mahodaya. This one you have given us putra dadati, pita putrena. Why tritiya vibhakti is coming there, Mahodaya? Yeah. The son gives. Son gives. See, who is the giver here? Son. Son. I am not the giver here. So yes, Mahodaya. In the Sanskritam, most of the time, prathama these are called prerit karta. The person who is making a prerana, atra pita, is called a preraka karta, and this putra is a prerita karta. इसे प्रयोजक भी बोलते हैं महोदय. जी, प्रयोजक भी बोलते हैं. हाँ, प्रयोजक and प्रयोज्य karta. हाँ. So for my understanding, it will be easier that I use preraka and prerita. Okay. So making him mostly to give, in the tritiya vibhakti eva bhavati. Making the son to give, no, sir? Yeah. Like as in a karana. Like I am not giving, but I am making someone else. I am giving through someone else, like a karana. Mata dandena putram tadayati. So she is using a danda to beat her son. So here the son becomes instrumental. Karana, that's right. Actually, it is a karta, but I have done a very rough example. So you can use as a, because this can be used as a karana. Okay. So it can be told as pita putram dapayati also, Mahodaya? No. No. I will come about the sutras, and I will come about how this, where it is tritiya and where it is tritiya. Please have some patience. I will explain everything. Thank you. And I will explain with the sutras. Don't worry. यहाँ पिता पुत्र के साथ कार्य करवाता है, ऐसे होता है. पुत्र के द्वारा
दान करवाता है। अब द्वारा करते हैं तो क्या विभक्ति आती है? तृतीया आती है। सो सामान्य रूप से जो प्रेरित करता है और प्रयोज्य करता है वो हमेशा तृतीया में काम करेगा, तृतीया में। For the 90 majority of the cases, I will not do any percentage, but there is a sutram or some types of some group of dhatus for which we have to use a dvitiya. I'll come to it later on when we do the formation of sentences. Now concentrate on the rupani now. Now we have a little bit of abhyasa. So hasati, like I have given the rupam, pathati, pathayati, pathayate. Both rupani have to be told. Okay, start with Bharati Bhagini. Hasati. हसति, हासयति, हासयते। Uttamam. Shobhana Bhagini. Gacchati. गच्छति, गमयति, गमयते। Uttamam. Keur Mahoday. Milati. मेलयति, मेलयते। Uttamam. Maithili Bhagini. Yudhyate. युज्यते ओकार हस्ति ओकार हस्ति योज्यति योज्यते Yodhayati. योजयति योजयति Yudhyate. To fight. योधयति योधयति योधयति. Sorry, So I was reading it. just keep this in mind that for the Nijanta, aya is always there. When you told Yudhyate, there is no aya. Yes. Yudhyate, there is no aya. You just sounded ya. महोदय पठति पाठयति पाठयते निजन्ता मध्ये द्वयोः रूपं चलति। आत्मनेपदी भवति, आत्मने अपि भवति, परस्मैपदी अपि भवति। अहम् इति भ्रमं प्राप्तवती। निजन्ता मध्ये अपि कर्मणि प्रयोगे भवति। सो कर्मणि होने से क्या होता है, या देखिए पाठ्यते। एग्जैक्टली। तो इसमें क्या होता है, ते दिखता है हम लोग, आत्मनेपदी प्रत्यय लगता है, वो आत्मनेपदी रूप नहीं होता, आत्मनेपदी का प्रत्यय लगता है और उसमें परस्मैपदी का प्रत्यय लगता है। यहाँ पर ती लगता है, वहां पर ते लगता है। लेकिन जब आप कर्मणि बनाते हैं एक दूसरा प्रत्यय आके बैठता है, उसका नाम है यक प्रत्यय। तो वो यक प्रत्यय भी इसमें बैठता है। यक में से ककार की संज्ञा हो जाएगी, केवल यह रहेगा। अत्रापि भवितुम् अर्हति कर्मणि प्रयोगे निजन्ता भवति एव, परन्तु इदानीं वयं कर्तरि मध्ये अस्माकं ध्यानं समर्पयामः। आं महोदय। कन्फ्यूजन मास्तु महोदय। कन्फ्यूजन मास्तु। वाणिश्री भगिनी वन्दते। अत्र द्वयोः निजन्ता मध्ये द्वयोः रूपम् अर्हति कर्तरि मध्ये। पाठयति पाठयते द्वयोः महोदय। Mahodaya, because I didn't get the earlier one correct, can I try this one? Try. Okay. Vandate. Vandayati, vandayate. Uttama. Why not vandayati? No, because it comes under the special category. That nakara hasti tatra. Sanyoga. Sanyoga hasti. Akarottara sanyoga. Now, tarati, Vanishri Bhagini. Tarati. Unmute bhavatu adau. तारयति तारयते। तारयते उत्तमम्। इदानीं सुषमा जी। नृत्यति। नर्तयति नर्तयते। उत्तमम्। धन्यवादः। भामति महोदय। भामति महोदय। ददाति दापयति दापयते। उत्तमम्। इदानीं पूर्णिमा श्रीनिवासन
पश्यति, द्रक्ष्यति, पासयति। एक मिनिट, महोदय। हाँ, एक निमिषम्। उर्मी भगिनी किमपि उक्तवती खलु मध्ये? पश्यति, पश्यति, द्रक्ष्यति, केन कारणेन दार्शयति। द्रक्ष्यति? केन कारणेन द्रक्ष्यति? महोदय, अहं न वदामि, अन्य हाँ हाँ, कोऽपि हम ददामि। मध्ये सा उक्तवती, अनेन मया किञ्चित् किमपि न उक्तं। पश्यति इति। उर्मी जी कृपया वीडियो वीडियो खोलें। धातु अस्ति न? 1 मिनट के लिए वीडियो खोलें आप। जी। पश्यति क्या रूप होना चाहिए? कोई और नहीं बोलेगा प्लीज। द्रक्ष्यति। द्रक्ष्यति कौन सा रूप हो गया? द्रक्ष्यति तो भविष्य काल का रूप है ना, लृट लकार का। हाँ। तो पाशयति होगा तो वो तो नहीं होगा। नहीं, देखिए मैं यही बोलता था कि आप ध्यान दीजिए मूल धातु क्या है। तो यहाँ पर दृश्य धातु है। हाँ, दृश्य धातु है ना। तो दृश्य धातु आप शांति से, अभी तक मैंने जो अभी तक पढ़ाया, आपने जो ध्यान से सुना होगा तो आपको मालूम पड़ेगा यहाँ पर दृश्य धातु है। तो उपधा में क्या है? उपधा का मतलब होता है लास्ट बट 1 लेटर। दृश्य को आप कैसे बाइफरकेट करेंगे? दृश्य, दकार, आप वीडियो खोल सकती हैं उर्मी जी प्लीज? जी। हाँ, तो दृश्य धातु में हम लोग सबसे पहले नया धातु बनाते हैं, ठीक है, निजंत धातु बनाते हैं। तो उपधा में रेफ नहीं है, यहाँ पर उपधा में रकार है, लघु रकार है, जो स्वर है दृश्य। तो अभी तो मैंने बताया कि यदि उपधा में रकार होगा, लघु अथवा ह्रस्व रकार होगा, तो उसको गुणादेश होगा, अर बनेगा उसका। और यदि तो दर रूप हुआ, ठीक है, दर्श आया, दृश्य का दर्श हुआ। उसके बाद में हम लोग ने जब धातु नया निजंत धातु का ई ऐड किया तो दर्शी बना, दर्शी बना। तो अब दृक्ष कहां से आया बताइए? उसमें क्या आना चाहिए? दर्शयति आना चाहिए। एग्जैक्टली, दर्शयति आना चाहिए। अब जब आप उसका भविष्यत काल करेंगे तो भी उसका दर्शयिष्यति आएगा, दर्शयिष्यति, क्योंकि ये धातु पूरा चेंज हो गया है। वो दृश्य धातु नहीं रहा अभी, ये नया धातु का रूप आप पढ़ रहे हैं अभी, ठीक है। पश्यति, दर्शयति, दर्शयते। Darsh is the new dhatus root. Darshi. Darshi. So all Rijanta will be Hrasva Ikaranta dhatu. Okay, now Pashyati. Nirmati. Purnima Srivasan Mohoday. Nirmati. निर्मायति। एक मिनट, आपका हो गया, मैंने पूर्णिमा जी को पूछा है। पूर्णिमा भगिनी। निर्मायते नहीं, इसमें ओरिजिनल धातु है माँ। आकारांत धातु को क्या आदेश होता है? दा धातु को क्या किया था आपने? दापयन्ति। माँ पे, माँ में क्या होगा? निर तो उपसर्ग है। निर तो उपसर्ग। आप माँ आपको ध्यान सामने में है। मापयति आएगा। एग्जैक्टली। तो क्या हुआ? निर्मापयति। निर्मापयति, निर्मापयते। उत्तम। निर्मापयति, निर्मापयते। समझ में आया आपको? हाँ।
और किसका बैकग्राउंड से नॉइज आ रहा है तो कृपया बंद करें प्लीज। थैंक यू। गणयति केयूर महोदय भवान् करोति वा? गणयति गणयते गणयति गणयते उत्तमम्। शृणोति रीटा भगिनी। श्रावयति श्रावयते उत्तम। श्रावयति श्रावयते। इदानीं यदा एतावत्पर्यन्तं लट् लकारस्य रूपाणि एव वयं पठितवन्तः, परन्तु सर्वेषु लकारेषु सर्वेषु कृदन्तेषु अपि एतेषां रूपाणि भवन्ति। मूलधातु पठ अत्र दृष्टमस्ति। पठति, अपठत्, पठिष्यति। तदेव पाठयति, अपाठयत्, पाठयिष्यति, पाठयतु, पाठयेत्, पाठनीयं, पाठयितव्यं, पाठितवान्, पाठितः, पाठयित्वा, प्रपाठ्य, पाठयितुम्। All krudanta rupani as well as all 10 lakar rupani will be possible because it is a totally new dhatu. So you have to practice this dhatu forms. It will be asked in the exam. Those who are giving the exam, and if those are not giving the exams, that practice is very much necessary. So we are taking a small abhyasa. Mahoday, can I ask you something? Yeah, please. So when we take the kru dhatu, it is karayati, karayate. So karayati, akarayat will come, is it, for past tense? Exactly. And karishyati for future. Okay, now you start. As you have started with the karayati. Sir, one doubt. Please go ahead. This Pathitah, then for striling it can be Pathita and Pathita. I have taken one root. Okay, so in it the will be there. Pathitavan, Pathitavati, Pathitavat, api bhavati. Yes. So those will be there. Yeah, exactly. Okay. Thank you. I have taken one root. Okay. So karayati. Lot will be karayatu. Karayatu. Karayantu. Lam. Lam will be akarayat. Akarayat. Lit. Karishyati. Karayishyati. Karayishyati. Tavyat. Karayitavyam. Karayitavyam. Tumun. Karayitum. अन्य कोऽपि वा वदतु। अहं सर्वेभ्यः अवसरं ददामि। अतः मैथिली भगिनी वदति। कारयितुम् अथवा कारयित्वा अन्य अन्य न कोऽपि वदतु कृपया। कारयितव्यं no, I'm not getting it. Karaniyam cannot come. Karaniyam is okay, correct? No, there. Karaniyam, no. Correct. Doesn't sound. Correct. It is Karaniyam only. Yes. And Tavatu? Karayitavan, Karayitavati. Karitavan, Karitavati. Oh, there's no in yakara. The aniyar and Tavatu pratyaya, there is not yakara. Okay. All other will have a yakara. How will we know where to? How will we know, Mahodaya? How will we know, Mahodaya, whether it is? That is what I am trying to say. In the aniyar and Tavatu pratyaya, there will be no yakara. In all other forms, you will get an yakara. So Karitavan, and Karaniyam, Karitavat. Okay. Okay. If there is, if I have to add a ta pratyaya, how will I add? Karitaha. Karitaha, Karita, Karitam. So just pashyatu, lota, karayatu. So one more doubt. If I add a nat pratyaya, it will become karanam, is it?
Which pratyaya? Nyat. Nyat, there's pratyaya called nyat, no? Like yat, nyat, something is there. Okay, I'll ask that later. When we will come to it, I'll ask. Thank you. Lang lakare akarayat karishyati karayitavyam karayitum karayitva karaniyam karitavan. Why karaniyam? ल्यूट् प्रत्यय मध्ये कारणम् अपि भवितुम् अर्हति कारणम् यत् विस्तृतं संस्कृतम् इदानीं दृश्यते ऋजन्त रूपाणि वदतु आदौ वाणीश्री भगिनी प्रदर्शयति इत्यस्य ऋजन्त रूपाणि वदति अन्य कोऽपि मा वदतु कृपया प्रदर्शयति अनन्तरं सोमशेखर महोदय निवेदयति इत्यस्य ऋजन्त रूपाणि वदति आदौ वाणीश्री भगिनी प्रदर्शयति प्रदर्शयति अप्रदर्शयत् लोट लकारे लोट प्रदर्शयत् लोट लकारे गच्छतु प्रदर्शयतु लंग लंग अप्रदर्शयत् no everyone does the same mistake here. You are not the only person here. Why? Pradarshayat. Exactly. Pradarshayat. Upasarga sarvada adau eva bhavati. Apradarshayat na bhavet. Ada adagam va adagam bhavati. Se sarvada dhatoho adau bhavati. Da akara akarasya agama bhavati lang lakare धातु आदौ भवति न तु प्रत्ययस्य उपसर्गस्य आदौ. So if there is an in the lang lakara there is an agama of hraswa akara or akara, right? Agachat. So akara or akara will always come before the dhatu, not the upasarga. So when you have a upasarga, then the agachat form or apradarshayat. So pra and adarshayat, pradarshayat. Then tavyat pradarshitavyam pradarshitavyam pradarshayitavyam pradarshitavyam pradarshayitavyam प्रदर्शयितव्यं प्रदर्श्य नहीं है प्रदर्शय प्रदर्श्य exactly प्रदर्शनीय then प्रदर्शितुम तुम क्या से आया प्रदर्शनीयम अनियर प्रत्यय प्रदर्शनीयम प्रदर्शितुम तुम कहाँ से है? तवतु प्रत्यय है, तुम प्रत्यय नहीं है. प्रदर्शितवान प्रदर्शितवती प्रदर्शितवान प्रदर्शितवती प्रदर्शितुम. It is not pradarshayittum mahodaya. तुमुन् प्रत्यये प्रदर्शयितुं भवति, परन्तु अत्र तवतु प्रत्यय अस्ति खलु. प्रदर्शितवान् प्रदर्शितवती प्रदर्शितवत्. Is it not pradarshya pradarshya something like that? Is it? Pradarshya is a twa pratyant or lep pratyant. Pra is an upasarga. So when there is an upasarga before a dhatu, it will not have a tvanta rupa.
It will Okay. have a Lyabanta Rupa. Okay. So I धन्यवाद. have not written Lyabanta just to check whether you know this Rupa or rule or not. Okay. धन्यवाद. When there is a Upasarga before a Dhatu, it will not have a Tvanta Rupa. Right. It will always have a Lyabanta Rupa. सोमशेखर महोदय, भवान् आरम्भं करोतु। आं महोदय। निवेदयति, निवेदयितु, निवेदयतु, निवेदयतु, न्यवेदयत्, न्यवेदयत्, उत्तमं। निवेदयत, निवेदयिष्यति, तव्यत्, निवेदयितव्यं, निवेदयितव्यं, निवेदयितुं, निवेदयित्वा, निवेद्य महोदय, मैं वही बोल रहा हूँ, मैं उनको खत्म होता बाद में उनको फिर से सुधारता। अच्छा चलिए, अभी मैंने 3 बार बोला था कि जब कोई भी उपसर्ग होगा धातु के पहले तो उसमें त्वांत रूप नहीं होगा। हाँ महोदय। निवेद्य, निवेद्य, निवेदनीयं, 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 निवेदितवान्, निवेदितवान्, निवेदितवान्। महोदय अत्र पश्यतु। यकार न आगच्छति वा? न, यकार नास्ति। अन्यर् तवतु प्रत्ययोः मध्ये यकार नास्ति, न श्रूयते। अस्तु महोदय, धन्यवादः। अतः पठतु कोऽपि। मैथिली भगिनी प्रदर्शयति इति पठतु। लोट् प्रदर्शयतु. For Nived, should I No, read the continue for the vertical line? Pradarshayati. Okay. Pradarshayat, Pradarshayati, Pradarshayatu, Pradarshayat, Pradarshayat. Pradarshayat. Sorry, just now we read about Pradarshayat, Pradarshaishyati, Pradarshayittavyam, Pradarshayitum, Pradarshya, Pradarshiniam, Niyam. Anatva nasti. Pradarshaniam, Pradarshitavan, Pradarshitavati, Pradarshitavat. सुंदरेश महोदय, भवान् निवेदयति इत्यस्य रूपाणि वदतु। निवेदयतु, न्यवेदयत्, निवेदयिष्यति, निवेदयितव्यं, निवेदितुं, निवेद्य, निवेदनीयं, निवेदितवान्, निवेदितवती। उत्तमम्। अवगन्तुं शक्नुवन्ति वा सर्वे? महोदय, अत्र नैवेद्यं अस्तु खलु? Naivedya is a different thing. Naivedya is not a dhatu. Naivedya is a krudanta rupam. Okay, धन्यवाद. Nivedya is a api krudanta rupam, lyap pratyanta rupam. एकम एकं कृत्वा वयं समय अस्ति, पञ्चनिमेषस्य समय भवति। एकम एकं कृत्वा रूपाणि वक्तव्यानि खलु? महोदय, अहं गन्तुं शक्नोमि? आम्, ये जनाः गन्तुम् इच्छन्ति ते गन्तुं शक्नुवन्ति। धन्यवादः। आरम्भं कुर्मः। आरम्भं करोतु। लिखति, लेखयति, लेखयति, लेखयिष्यति, अलेखयत्, लेखयितव्यं, लेखयितुं, लेखयित्वा, लेखनीयं, लेखितवान्। प्रविशति, रीटा भगिनी। प्रवेशयति, प्रवेशिष्यति, प्रवेशयिष्यति, प्रावेशयत्, प्रवेशयितव्यं, प्रवेशयितुं, प्रवेश्य, प्रवेशयित्वा,
प्रवेशनीयं केन कारणेन प्रवेशयित्वा एतावत् पर्यन्तं मया किम् उक्तं? प्रवेश्य 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 प्रवेशनीयं प्रवेशयित्वान् प्रवेशितवान् प्रवेशितवान् सुषमा भगिनी बुध्यते बुध्यते बोधयति बोधयिष्यति लङ् अबोधयत अबोधयत् अबोधयत् बोधितव्यं बोधयितव्यं बोधयितव्यं बोधयितुं बोधयित्वा बोधनीयं बोधितवान् बोधितवती उत्तम। थैंक यू। पद्मा नागेश महोदय पिबति। पा धातु पापयति। I have told that some dhatus have Yes. yakara Yeah, agama. पाययति 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 पास पाययति. Forget about the pasyati. This is a new dhatu. Yes. Payayati. Payayishyati. Exactly. Payayishyati. Payayishyati. Apayayat. Payayat. Payayitavyam. Payayitum. Payayitum. Payayitva. पायनीयं पायितवान्. उत्तमम् उत्तमम्। अन्य कोऽपि? उर्मी भगिनी, उर्मी मचेटिया भगिनी। गायति गापयति गापयति गापयिष्यति गापयेत् अगापयत् अगापयत् गापयितव्यं गापयितव्यं गापयितुं गापयित्वा गापनीयं गापयितवान् गापितवान्। अनियर एंड तवतु प्रत्यये यकारः नास्ति। गापितवान् न तु गापयितवान्। पुनः प्रणमति। काम् आह्वयामि। वर्षा भगिनी प्रयत्नं करोति वा? कुमुद भगिनी सविता भगिनी प्रयत्नं कर्तुम् इच्छति वा? ओके समझ। प्रणयत प्रणमति प्रणमयत मयति प्रणमयति प्रणमयति प्रणमयिष्यति प्रणमयिष्यति मयत प्राणमयत् प्राणमयत् फलंत प्राणमयत् तव्यत् प्रणमयितव्यं प्रणमयितव्यं प्रणमयितुं प्रणमयित्वा
प्रणमयित्वा हाँ हाँ हाँ, फिर वहीं पर आउट हो गए आप। प्र उपसर्ग है तो त्वांत रूप नहीं होगा, लेपंत रूप होगा। सॉरी सॉरी प्रण 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 प्रणमय्य प्रणमयी स्पेशल है, मय्यम प्रणमय्य। then प्रण नियम प्रणमनीयम। प्रणित प्रणम नियम प्रणम प्रणित प्रण सॉरी प्रणमितवान। मितवान प्रणमितवान। प्रणमितवान। समझ में आ रहा है? The left जी, sir. pratyaya will be pranamya, isn't it, Mahodaya? For this? Pranamaya. Pranamaya. There is a special Pranamaya. rule here. Pranamaya. Pranamya will be non-nijanta, but because of the nijanta, it will be pranamaya. Because it comes in Bhagavad Gita. Pranamya will be in a non-nijanta. Janati. तेजल भगिनी प्रयत्नं करोति वा? भामती महोदय, पद्मा न, सोमशेखर महोदय भवान् वदतु। जानाति। जानाति, ज्ञापयति, ज्ञापयिष्यति, अज्ञापयत्, ज्ञापयितव्यं, ज्ञापयितुं, ज्ञापयित्वा, ज्ञापयितुं, ज्ञापनीयं, ज्ञापयितवान्, ज्ञापितवान्। ज्ञापितवान्, ज्ञापितवान्, उत्तमम्। इदानीं भामती महोदय। आं महोदय। चलति। चलति, चलति, लति। चालयति, चालयति, चालयिष्यति, चालयिष्यति, अचालयत्, अचालयत्, चालयितव्यं, चालयितव्यं, चालयितुं, चालयितुं, चालयित्वा, चालयित्वा, चालनीयं, चालनीयं, चालितवान्। चालितवान्, उत्तमं, सम्यक्। प्राप्नोति, प्राप्नोति। निशा भगिनी अस्ति वा? निशा भगिनी वदतु। प्राप्नोति। श्रूयते वा? निशा भगिनी? महोदय श्रूयते। न, निशा भगिनी वदति न वा? प्राप्नोति। प्राजक्ता भगिनी, भगिनी वदति वा? प्राप्नोति। प्राप्नोति, प्राप्नोयति, लङ्गलकारे। It's like da dhatu. प्रापयति। Exactly. प्रापयति। प्रापयति, प्रापयत्, अप्रापयत्, प्रापयत्। आदौ लृट् लकार। प्रापयिष्यति। प्रापयिष्यति, लङ्। प्रापयत्। प्रापयत्. You were about to tell aprapayat, right? Yeah. But it is prapayat, isn't it? Prapayat, yes. Prapayat. Then prapitavyam. Prapayitavyam. Prapayitavyam. Prapayitum. Then prapaya. Exactly. Prapaya.
प्रापय्य, प्रापनीयम, and प्रापितवान. उत्तम. प्रापितवान. Mahoday, it's prapavaya, is it? प्रापय्य. Prapayya. Prapayya. So prapya will be non-nijanta, but in the nijanta, prapayya. Karoti, easy. Shankar Mohoday, param karoti ba? कारयति Lit. कारयिष्यति Lang. अकारयत् Akarayat. Tavyat. कारितव्यं Karayitavyam. कारयितव्यं Tumun. कारयितुं Twa. कारयित्वा Karayitva. कारणीयं Karaniyam. कारितवान् Karitvaन. Uttamam. Samyak. Sir, there karishya also we can use, sir. Karishya to lit lakare bhavati samanya non-nijante. If it is a non-nijanta, karishyati. But if it's a nijanta, karayishyati. So karishyati is he is doing. He makes someone do. Karayishyati. Karayishyati. Santrupyati. Santrupyati. Who wants to take this challenge? Santrupyati. There is Pallavi Bhagini. Adau video udghate. Sam upasargah asti atra. Adau video udghate idu kripya. महोदय स्वस्थानास्मि. अस्तु. केवलं यावत् पर्यन्तं वदति तावत् पर्यन्तमेव. आं सन्तृप्यति तर्हि सन्तर्पयति. सन्तर्पयति उत्तमं. सन्तर्पयिष्यति. तव्यत्. समा न लङ् लकारे. लङ् लकारे. अच्छा हाँ तर्हि अतर्पयत् अस्ति तर्हि समतर्पयत् भवति वा? समतर्पयत् उत्तमं. समतर्पयत्. तव्यत्. सन्तर्प्यत् सन्तर्प्य सन्तर्पयितव्यं. सन्तर्पयितव्यम्. आम्. तुमुन्. सन्तर्पयितुं. त्वा. सन्तर्प्य. सन्तर्प्य उत्तमम्. अनन्तरं किमस्ति महोदय? अन्यत्. सन्तर्पणीय. सन्तर्पणीय. अणीय. अणकार. अणीयम्. सन्तर्पणीयम्. तथा तव तु सन्तर्पितवत्. सन्तर्पितवान्. सन्तर्पितवान्. सन्तर्पितवती. उत्तमं. बहु सम्यक्. So this is the whole table. So what is the meaning of santarpya? Trupyati is to make someone happy or satisfied. Same, to make it more happy or satisfied. Thank you so much. So you all practice this. Sir, it is given also we can use, sir. Santarpitavan. Given like that also we can use. To give? This is samarpana. Samarpana. Okay, okay. So usually when a person visits Kashi and goes back to his native, they do santarpane, like they make others to have food and then Tripti, no sir. This is Tripti, no sir. For Tripti, no sir. Make them sit in a row. They toshayati. Saha toshayati. Pitaram toshayati. Pitruns toshayati. हम लोग हमारे पितरों के लिए कर रहे हैं ना. तर्पण किसके लिए कर रहे हैं? हमारे पितरों के लिए. So पितॄन तोषयति in that sense, happy, to make them happy.
We offer Usually some there is food a and word some called- water to make them happy. There is called like Anna Santarpana. Like they make them sit in a row and then give them food. Yeah. That is also It like basically is the Santarpana. same thing. We are offering for our Pitru. सोमशेखर महोदय प्रश्नः अस्ति? महोदय अत्र अन्तिमपदे सन्तर्प्य ल्यप् प्रत्ययः सन्तर्प्य वा सन्तर्पय्य वा? न, सन्तर्प्य एव। अस्तु महोदय, धन्यवादः। पद्मा नागेश जी। Mahodaya, we studied in Shiksha, Ganayati is for counting by oneself. So what is the thing for Nijanta for Ganayati? Because in that it's the same thing, because there is no change. In the Rupam, there will be no change. Even if I am counting or I make someone else count, the Rupam will be the same. Oh, because Ham in that the ganayami, Yappa Aham ganayami, Aham bhavatya ganayami. Okay. Oh, because in that also 10th Gana is it, Mahodaya? Churati Gana. So make them count means so make them count what to do. Ham bhavatya ganayami. I make her to count. Oh, okay. Because here the Lebanta Rupa is V Ganaya. That is why I'm asking the Ganaya. Yeah. Ganaya. V Ganaya. So Nijanta Rupa is also Ganayati only, Mahodaya. Both. Yes, in the Lapanta, there is, in the Churadi Gana, there will be no change in the Rupa because there Nichi is already added. Even how if to we know add whether two which Nichi, Gana it is, Mahodaya? How to find out which Gana it is? Except the 10th Gana, you will have, in the 10th Gana, you will always find Aya, Chorayati, Ganayati, Mapayati, Khalayati, Prakshalayati, Aya, you will find. Aya. So if it is That is a Aya, tip. it will always be Aya, Churadi. Churadi Gana. But Okay, thank rarely you, some Mahodaya. other Ganas also have Yakara, no Mahodaya? There will be I think in 6th Divadi. Gana or But somewhere. there is a Divadi Gana is Yakara Keval, not Aya. This is only Yakara. Yatha Div Dhatu Shyan iti Vikrana Pratyaya. So Divyati iti Rupa Bhavati. Devayati Nasti. Siv Dhatu Sivyati. Natu Sivayati. So there is a difference between Ya and In Aya. Gana Dhatu, there will be no Labanta because Upasarga is not there. So No. it I have Kvanta. no. He just asking about the Ganayati. So Lebanta is there, Lebanta is there. It is B Ganaya. Ganayitva, If you are adding a V Ganaya. Upasarga, no, she was asking that in the Ganayati there is no Upasarga, but in the V Upasarga, if you add V Upasarga, then Viganaya. Viganaya. धन्यवादः। अस्तु, तर्हि स्थगयामः अद्यतनवर्गे। करपत्रं प्रेषयिष्यामि। आचार्य।